हाय एवरीवन। तो CHSe का एग्जाम करीब आ रहा है। करीब क्या, आई बी पब्लिशिंग दिस ऑन और रिलीजिंग दिस वीडियो ऑन 9th of March और एग्जाम 10th of March को है, तो काफी लेट हो गया बट कुछ इश्यूज थे। एनीवे तो आज यहाँ पे MCQs हम करने वाले हैं। जितने भी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉर CHSe ऑल्टरनेटिव इंग्लिश एग्जाम, उसके जितने भी MCQs आई कुड गैदर, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन है हु हैज पेन्ड द पोएम द गोट पाथ्स। साइड में मैंने आंसर लिख लिया है पहले से ही, जेम्स स्टीफेंस। हु हैज पेन्ड द पोएम ऑफ अ क्वेश्चनेबल कन्विक्शन, जयंत महापात्रा। हु हैज पेन्ड द पोएम मिरर, वेरी वेल नोन, वेरी फेमस, सिल्विया प्लाथ। हु हैज कंपोज्ड द पोएम टोड्स, फिलिप लार्किन। ठीक है, अभी एक एक पोएम को इंडिविजुअली हम एनालाइज करेंगे वाया MCQs। तो पहले शुरू करते हैं हम गोट पाथ से। The goats travel in what kind of paths? Okay, I would suggest कि आप MCQs अटेंड करने से पहले काइंडली गो थ्रू द वीडियोस जहाँ पे मैंने पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आप प्लीज अपने जो पोएम्स है टेक्स्ट में, बुक्स में जो पोएम्स जितने भी हैं, काइंडली गो थ्रू द लाइंस, क्योंकि जितना मेरा एनालिसिस है, जो रिसेंट पैटर्न आपका है CHSE का, बहुत क्लेवरली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वहां पे, बहुत इन डेप्थ और क्लेवर क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद द टेक्स्ट वट एवर यू आर रीडिंग, you know, be it a prose piece or a poem or stories or drama, anything, you have to be completely thorough with the text part. Okay, so the goats travel in crooked lines. What do they like? Quiet sunniness, sunny quietude, staring at the sky, या फिर all of the above? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दे एंगेज्ड इन, यानी कि जो बोर्ड्स है वो किस किस चीज में बिजी हैं? फीडिंग हियर एंड देयर, स्टेयरिंग एट द स्काई, या फिर बोथ, दोनों। ठीक है, तो वो ना क्या करते हैं, हेदर हेदर इन एंड आउट। वहां पे एक फ्रेज है आपका फर्स्ट आंसर में, हेदर इन एंड आउट, मतलब थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। ड्राई ग्रासेस आर ग्रोइंग एवरीवेयर in a scattered way along the hills, on the mountains, and they are, you know, going through that, they're traveling through that, and wherever they can find the grasses, they're feeding upon them. Okay, and sometimes they search for quiet places and they sit and they stare at the sky. Okay, so question number 7 का आंसर होगा both. Question number 8, how do they react when they are disturbed? तीन ऑप्शंस है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन ए, they leap and stare and run with a bound while making an angry noise. Okay. Question 9, staring on the growing sky. Okay, I think ये growing sky has some, I think इसमें कुछ spelling mistake है. Anyway, what can it translate to? It means they contemplate in silence by looking at the blue sky. Okay. Question number 10, what kind of goats are they? किस तरीके के goats के बारे में हम बात कर रहे हैं? When we are talking about goat paths, तो ये कौन से goats हैं? वो माउंटेन गोट्स हैं। माउंटेन गोट्स कैसे दिखते हैं? यू गूगल देम, और एल्स आप मेरे इस पोएम के एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके उनको देख लीजिएगा। What do they do after they are disturbed? Okay, when they are disturbed, what do they do? They run to a new quiet place and crouch and continue to brood. तो वो एक जगह पे बैठे होते हैं एंड दे कंटिन्यू देयर साइलेंट बिजनेस, जो भी है चुपचाप से बैठे होते हैं। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, जाके उनको अगर डिस्टर्ब करेगा, they immediately get up, they'll make an angry noise, and they run to another place. And again, they find a quiet, peaceful place and they settle down over there. Okay. Question number 12. Answer is simile. Okay. Question number 13. What if the poet was given a chance to become like a goat? Poet वहां पे एक लाइन में लिख रहा है, if I were as wise as they. ठीक है, अगर मैं उनके तरह वाइज होता, या फिर मैं उनके तरह बन पाता, या उनके कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब कर पाता, तो
what option he would take from if look at question number 13, he would choose the option A. Okay, he would go away from disorder and people and silently think of a new path or invention or idea. Okay, what would be his reaction if he would be disturbed? ठीक है, आंसर है A. जैसे गोट्स बिहेव करते हैं डिट्टो सिमिलरली वो भी उन्हीं की तरह बिहेव करेगा. अगर उसको कोई डिस्टर्ब करेगा, he'll immediately get up, he'll make an angry noise, he'll look at them and then he'll go somewhere and find another place where he can sit peacefully and contemplate. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है A. Going to question number 15. Why does he want to escape? Okay, why does he want to escape is to think hard to find a solution to the chaos that he is in as a human being and to find something that would be a miracle to him. To find something that would bring him recognition, that would bring him peace. Okay? Until when does he wishes to be left alone like the goose? ठीक है, तो पहले तो गोट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं वो अपने पोएम में. उसके बाद ही राइट्स की अगर मैं उनकी तरह होता तो मैं कैसा बिहेव करता और क्या करता. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन ए. जब तक उनको कोई until and unless he gets something new, he discovers something new, तब तक he wants to remain unfazed and quiet like a goat. He wishes to be left alone like a goat. Okay. Question number 17. Goat paths refer to. ऑप्शन ए आपके सामने है, बी सी डी सब आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. Why are the goats wise? Why are the goats wise? ऑप्शन डी, all. They know how to find their peace. उनको अगर आप डिस्टर्ब भी कर लो ना तब भी वो जाके अपना पीस ढूंढ ही लेते हैं. ओके. एंड most importantly they can also express their anger by making noises. Humans का क्या है ना, आपको कोई अगर डिस्टर्ब कर ले and you are a people pleaser, you don't know how to express. You don't know how to express that you are angry, that you are not happy with them, you are disappointed. You would like, you would like brush it off. हाँ ठीक है चलेगा if he behaves to me in that form. लेकिन goats are not like that. They know how to behave. They know how to express. They know where to find their peace. Okay? चलो अभी जो next set of questions आएंगे, you have to answer the questions keeping in mind the poem of a questionable conviction. What is this man assumed to be? Option B, poet. ठीक है. Why is this man pitiable? क्यों pitiable है? Option A, he has pain in his eyes. Option B, his everyday life is filled with poverty. C, he is a slave to the fleeting thoughts. D, he was never recognized for his art. आंसर है ऑप्शन E, all. ठीक है. Question number 21. Why does he wait? Okay, he keeps on waiting and waiting. तो क्यों वो वेट कर रहा है? उसका आंसर होगा ऑप्शन A. He waits for the idea to rush into his head. Okay. See, if you are a poet, तो अगर हम डैफोडिल्स की बात करें ना, तो वी लाइक टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. ओके. अगर आप कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, पोइट्स का क्या होता है, दे राइट डाउन पोएम्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन देयर फीलिंग्स. यस, तो उसके लिए थॉट्स तो आना चाहिए ना दिमाग में. और हमारा ये पोएट ऑफ अ क्वेश्चनेबल कन्विक्शन पोएम का जो पोएट है, ही कीप्स ऑन वेटिंग फॉर दैट थॉट, कि एक प्रॉपर पर्टिकुलर थॉट मेरे दिमाग में आए तब जाके मैं कुछ लिखूं. Okay, and so he goes on waiting and waiting for that thought to enter into his mind. Okay, ऐसे नहीं कि immediately आए और वो पेन कर ले. थॉट्स बहुत से आएंगे उसके माइंड में, 10, 100, 1000 बहुत से थॉट्स. उसी थॉट्स में से एक थॉट को वो लेके उसको वो पॉलिश करेगा लाइक अ डायमंड. यानी कि वही रफ थॉट को ही इज गोइंग टू पॉलिश इट इनटू अ फाइन कॉम्पोजिशन, और वही कॉम्पोजिशन को दुनिया के सामने वो प्रेजेंट करेगा एज अ ब्यूटिफुल पोएम. राइट. Question number 22.
इन्वेंटेड इट हिमसेल्फ, मेड अ वर्च्यू ऑफ इट, ये दोनों जो फ्रेजेस हैं इनका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, द पोएट नोज पेन, he owns it through his struggles, he glorifies pain in his poetry. Option B, he is a slave to pleasure. सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन 23, empty window in his lonely wall, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों, ए और बी. ओके, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज द विंडो डिसीविंग हिम? द आइडिया, सी विंडो क्या होता है? अगर आप पोएम पढ़ोगे तो विंडो जो है वो है उसका हार्ट. यस, सो वंस द आइडिया विल रश इन इनटू हिज माइंड, इट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड बाय द हार्ट. ओके, एंड उसके बाद वो उसको पॉलिश करेगा. राइट, देखो अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ उस वीडियो में, देन यू काइंडली पॉज द वीडियो, उसके बाद एमसीक्यूज को देख लेना. ठीक है, ऑलराइट. अब मैं यहाँ पे पोएम नहीं समझा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द पोएम. आई एम ओनली डिस्कसिंग द पॉसिबल एमसीक्यूज दैट कैन अराइज फ्रॉम द पोएट्री, फ्रॉम ऑल दीज पोएम्स. ओके, एक ही वीडियो में, ये एक ही वीडियो में आपका आई गेस 4 पोएम्स डिस्कशन हुआ है ओनली इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है, What does the phrase polish the light on his heart mean? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? Option A, the crude idea is being refined into a poem through his ingenuity. Option B, like polishing a diamond, he is polishing the rough ideas into a fine composition. Option C, using a sandpaper, he is polishing the bars of the window. और जो लोग पढ़े हैं उनका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नहीं, उनका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों ही सही है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ स्टांजा? कहाँ, किसके फोर्थ स्टांजा में? पोएम के फोर्थ स्टांजा में क्या होता है? पीपल आर टॉकिंग अबाउट द डेड पोएट. इन द फोर्थ स्टांजा द पोएट इज ऑलरेडी डेड एंड गॉन, and the fourth stanza is entirely told from the perspective of the people nearby, of the audience, of the general public. ठीक. Question 27, what did the public talk about him? They saw pain in his eyes and considered him a harmless person and assumed he must have been a poet. They never bothered about his welfare while he was alive. यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन डी. नहीं, हाँ, ऑप्शन डी. Question 28, what is the central meaning of the title of the poem? कौन सा पोएम? Of a questionable conviction का मीनिंग क्या है? सेंट्रल मीनिंग क्या है? He questioned his creativity as a poet since he never got recognition as long as he lived. People never regarded him a poet seriously and considered his creativity to be a pastime. Poetry as a job is never fulfilling, so the idea to become a poet is out of question. आंसर है all of the above. यानी कि of a questionable conviction is basically about a poet who never received recognition. Is basically about a poet who struggles with the idea of writing a poetry. Yes. Okay. अभी क्वेश्चन नंबर 28 या जो भी है उसके बाद से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो सब होंगे विथ रेस्पेक्ट टू द पोएम मिरर. सो आई इन द मिरर, मिरर का शुरुआत होता है ना आई एम सिल्वर एग्जैक्ट. तो आई क्या है? आई रेफर्स टू द मिरर. ओके, ऑप्शन ए मिरर. नेक्स्ट, हाउ इज द मिरर डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ? A, silver and exact with no assumptions. B, truthful. C, unbiased. D, all of the above. Answer होगा all of the above. What is the meaning of the phrase the eye of a little god four cornered? Okay, four cornered का मतलब है कि मिरर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और लिटिल गॉड का मतलब है जैसा कि गॉड आपको आपके कर्मा के बेस्ड रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि अनबायस्ड होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं,
एग्जैक्टली मिरर भी वैसे ही ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके। 31, व्हाट डज इट ऑफन डू? व्हाट डज इट ऑफन डू मतलब मिरर यूजुअली क्या करता रहता है? ऑप्शन ए, मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल। क्वेश्चन 32, हाउ डज द वॉल लुक? इट्स अ पिंक वॉल विथ speckles. B, it's an old wall that's peeling off due to age. C, yellow with speckles. या फिर D, A and B. आंसर होगा A and B. Okay. How does it feel after staring at the wall for so long? So the mirror keeps on staring at the wall for a long time. And how does it feel? इसका आंसर होगा ऑप्शन A. The wall has become a part of its own. मिरर को लगता है कि वो wall, that wall is not different from it. It's a part of its own. When does it flicker? A, due to light or sunlight. B, when someone stands in front of the mirror. C, when the mirror closes its eyes. D, both A and B. आंसर होगा both A and B. That is, जब मिरर के सामने कोई आके खड़ा हो जाता है ना, तब मिरर सामने वाले वॉल को देख नहीं पाता, या फिर जब आप उस कमरे का लाइट ऑन ऑफ करते हो, या फिर जब यू नो सनलाइट आता है और रात को सनलाइट चला जाता है, yes, the night descends, तब क्या होता है? mirror is unable to see the wall. Okay. So it depends कि सनशाइन है तो मिरर देख पाता है, सनशाइन नहीं है तो मिरर नहीं देख पाता है। रूम का लाइट ऑन है तो मिरर सामने वाले वॉल को देख पाता है, रूम का लाइट ऑफ है तो मिरर सामने वाले वॉल को नहीं देख पाता। मिरर के सामने कोई खड़ा होता है तो मिरर सामने वाले वॉल को नहीं देख पाता, और जो भी खड़ा होता है जब वो चला जाता है तो अगेन द मिरर इज एबल टू सी द वॉल इन फ्रंट ऑफ इट। ओके। 35, who are the liars? Candles and moons. Sorry, candles and the moon. Okay, next. I have covered so many MCQs, it's like more than 50, so I'm kind of rushing through it. Why does she turn away from the mirror? Because she is unable to accept the way she is aging. Okay. How is the mirror awarded for its honesty? Through tears and agitation of hands. Answer is D. I am important to her. She comes and goes. It means that she hates the mirror, yet she looks at it every single day. Okay. 38. The mirror has transformed into dash, and the woman's age is compared to dash. The mirror has transformed into a lake, and the woman's age is compared to a fish. Okay. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एक लाइन आएगा आपको, नाउ आई एम अ लेक इन द पोएम, एक लाइन आएगा, नाउ आई एम अ लेक, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, रिमेंबर इट, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 39, द वुमन विजिट्स द मिरर एवरी, द आंसर इज इन द पोएम, द वुमन विजिट्स द मिरर एवरी मॉर्निंग। ओके। क्वेश्चन 40, इन मे शी हैज ड्राउन्ड, इसका मतलब क्या है? The mirror has witnessed her process of aging, like a lake over whose waters the woman has looked at her reflection throughout the years. Okay, यानी कि देखो, जब मिरर कहता है कि I am a lake, मतलब जैसे कि वाटर रिफ्लेक्ट करता है योर फेस completely. Similarly, mirror is saying that I am a lake, I am a mirror, I am everything. I know how she has aged through the years. I have seen her. I have been truthful to her. I have been faithful to her. I am a witness to her aging. Everything. Okay. Okay. Chalo. The poem is metaphorical in nature. Okay. इंस्पिरेशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी ब्रूटल नेचर का भी है, बिकॉज मिरर जो है बहुत ही ज्यादा फेथफुल है, बहुत ही क्रूड वे में ऑनेस्ट है, विच इज नॉट लाइक्ड एग्जैक्टली बाय द वुमन। और आई एम अ मिरर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अ लेक, ये सारा जो इस्तेमाल किया गया है फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है। तो सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम इज मेटाफोर।
The mirror is narrating the poem itself, hence it is first person narrative. Okay, चलो अभी क्वेश्चंस शुरू करेंगे हम related to the poem Toads. Toad is a metaphor for क्या? Crude, thankless job. Okay. Who are the toads in the poem? तो ये जो पोएम है ना टोड्स, हम चाहे तो इसमें टोड भी लिख सकते थे, सिग्निफाइंग द एनिमल ओनली, लेकिन हम यहाँ पे टोड्स लिख रहे हैं. टोड्स यानी कि कोई लोग बोलेंगे कि सिर्फ दो ही चीजें हैं यहाँ पे टोड्स, नहीं, यहाँ पे तीन चीजों को टोड्स रेफर किया जाता है. पहला जो है वो एनिमल है इटसेल्फ, द अनअट्रैक्टिव अगली एनिमल. दूसरा है द हार्ड वर्क दैट द मैन इज डूइंग, ओके, द जॉब दैट ही इज डूइंग. तीसरा है मैन अपने खुद के लक को कहता है टोड, मतलब इट्स वेरी अगली एंड अनअट्रैक्टिव. ओके, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज ही इंटेंड टू डू टू ड्राइव द ब्रूट ऑफ? ऑप्शन ए, पियर्स द टोड विद अ पिचफॉर्क एंड थ्रो इट आउट. ओके. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट द टोड डज फॉर 6 days ऑफ अ वीक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, soils his life with sickening poison. Question number 47, does the toad or the thankless work, whatever he is doing, worthwhile? और आपका आंसर होगा कि नहीं, worthwhile नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोएट है, जो आपका जो काम पे जाता है, जो भी इंसान काम पे जाता है, द नरेटर, he is saying that I do not want to do this job, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है और पैसे जो मिलते हैं वो सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं होते हैं. ओके, तो आपके इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए, द पेचेक नेवर कवर्स ऑल हिज ओवरवेलमिंग बिल्स, यानी कि वो जो जॉब है दैट इज नॉट वर्थवाइल. क्वेश्चन 48, हु लिव ऑन देयर विट्स? refer to the poem when I'm saying, when I'm discussing this question, completely refer to the poem. Option A, lecturers, lispers. Option B, losers, lovelorn men, louts. Option C, both. आपका आंसर है ऑप्शन ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डज ही डिस्क्राइब द पुअर हु सर्वाइव विदाउट मनी? उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 50, इफ he would be courageous for once, then what would he do? He would shout, stuff your pension. Okay. क्वेश्चन नंबर 52, ड्रीम्स आर मेड ऑन. इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब है कि one can only think about leaving a job, but in the real world it's not possible. और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि sometimes there are certain dreams which are unachievable. सपने देखो लेकिन सपना पूरा भी करना सीखो, राइट? किंतु लेकिन कुछ ऐसे भी सपने हैं जो कि पूरे नहीं हो सकते. ओके. 53, sufficiently toad like squats in me. ओके, तो ऑप्शन क्या है? The animal is sitting on him. See, sufficiently toad like spots in me. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि there is something within me which is preventing me from leaving this particular job, which is preventing me from shouting at my owners, which is preventing me from leaving a life that I want or leading a life that I want. What is that? That is his hard luck. उसका luck इतना खराब है कि he knows that he has to work hard, क्योंकि luck नहीं है उसके पास. His hard and cold luck and a poor life is forcing him to unwillingly continue his job. Okay. Can he get rid of any of the toads? तो टोड पोएम में फाइनली हम जब लास्ट आंसर को आते हैं, a question arises in our minds, will he be ever be able to get rid of any of the toads? आंसर है no. Question 55, why cannot he get rid of any of the toads? आंसर है he needs a job and he has to do his job in order to survive. ओके, कटथ्रोट वर्ल्ड में जहाँ पे इंजीनियर्स आके अगर मैं रियलिटी की बात करूं, जहाँ पे आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, वेरी आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्क रियलिटी, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट अभी का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है इंडिया में, कॉम्पिटिटिव नेचर,
ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट चल रहा है ना, यहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग भी आके क्लरिकल जॉब्स कर रहे हैं. तो अगर किसी के पास जॉब है, why would he leave that job, right? तो आंसर है ए एंड बी. क्वेश्चन 56, what are his regrets? आंसर है all. Okay, चलो, thank you everyone and all the best for your exams.